लोक निर्णय 2024। Good evening, listeners. Welcome to our new series on elections, Lok Nirnaya 2024. In this program, we will bring you election-related developments, various updates and analysis of general and assembly elections 2024. My name is Sonu Sood, and with me is my co-anchor, Santosh Pathak. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। इस कार्यक्रम में हम चुनाव संबंधी समाचारों के साथ साथ विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मतदाता जागरूकता पर भी करेंगे बात। इन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए हम स्टूडियो में बैठे विशेषज्ञों के साथ साथ अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं को भी इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक टी.आर. रामचंद्रन जी। टी.आर. रामचंद्रन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। And now let's listen to the news related to the elections. But first, the headlines. EC removes Home Secretaries in 6 states, West Bengal DGP ahead of Lok Sabha elections. NDA allies in Bihar finalize seat sharing agreement, BJP to contest on 17 Lok Sabha seats, JDU on 16. अब हेडलाइन हिंदी में। बिहार में एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा तय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी राज्य की 40 लोकसभा सीटों में से 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं जनता दल यूनाइटेड 16 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक और 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाया। मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासनिक प्रभाग के सचिवों का भी किया तबादला। And now the news in detail. The Election Commission today ordered large-scale transfers of bureaucrats ahead of the Lok Sabha elections. The Commission removed the Home Secretaries in 6 states along with the Director General of Police of West Bengal. Sources said that the Home Secretaries have been removed in Gujarat, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Himachal Pradesh and Uttarakhand. The Secretaries of the General Administrative Department in Mizoram and Himachal Pradesh have also been shifted. Besides, the poll body has ordered the removal of Brihan Mumbai Municipal Commissioner Iqbal Singh Chahal as well as additional commissioners and deputy commissioners. सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को आज चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी विवरण की जानकारी देने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने एसबीआई को 21 मार्च तक खरीदार और प्राप्तकर्ता राजनीतिक पार्टी के बीच के संपर्क को दर्शाने वाले यूनिक बॉन्ड नंबरों को भी जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने एसबीआई के अध्यक्ष को 21 मार्च की शाम 5 बजे तक न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इस हलफनामे में यह दर्शाया जाना चाहिए कि एसबीआई ने बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी दे दी है। In Assam, the election campaign for the Lok Sabha polls has begun in the state following the declaration of the schedule. Polling for 14 seats will be held in 3 phases in the state. The BJP and its allies, Assam Gana Parishad and UPPL, declared their candidates for all 14 seats. The BJP will contest in 11 seats, while Assam Gana Parishad will field candidates in 2 seats and UPPL will fight in 1 seat. The Congress has also declared candidates for 12 seats and the party will support Assam Jatiya Parishad at Dibrugarh. Other parties including TMC, AAP, Bodoland People's Front, CPIM declared party lists. Chief Minister and senior BJP leader Himanta Biswa Sarma is holding rallies today at Karimganj seat. Other senior leaders of different political parties are also attending public meetings and rallies today to woo the voters. बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगियों ने लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। गठबंधन के तहत राज्य में कुल 40 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 17 लोकसभा सीटों पर, जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाला हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक मोर्चा राज्य में एक एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे। आज नई दिल्ली में भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने इसकी घोषणा की। इस अवसर पर बिहार भाजपा अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राजू तिवारी और अन्य नेता मौजूद रहे।
As per the direction of Election Commission of India, the schedule for elections for Sikkim is that the notification will be issued on 20th March. The last date for filing of nominations will be on 27th March. The scrutiny of nominations will be held on 28th March. Similarly, the last date for the withdrawal of candidature is 30th March. The date of polls is on 19th April, followed by counting of votes for Sikkim Legislative Assembly on 2nd June and for Lok Sabha on 4th June, and the date before which elections shall be completed is on 6th June 2024. It was also mentioned that no nominations will be accepted during public holidays. The CEO notified that there are a total of 4,63,929 voters in Sikkim as on 16th March 2024, out of which there are 2,32,381 male voters and 2,31,545 female voters and 3 third gender voters. Under service voters, there are a total of 2,469 male voters and 33 female voters, totaling to 2,502 voters. There are a total of 4,192 persons with disabilities voters all over the state and a total of 2,473 senior citizen electors above 85 years. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर कड़ा आक्षेप किया है। शिवमोगा में रैली के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है। वहीं तेलंगाना के जगतियाल में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। And Mr. Ramachandran, you know, in Bihar, NDA allies have finalized their seat sharing agreement for the Lok Sabha polls. And out of total 40 seats, BJP will fight on 17, JDU on 16, and Lok Jan Shakti Party Ram Vilas on 5 seats. How do you see this alliance, and how do you see the election, battle heating up in Bihar? Well, I think Bihar is a state which has always had a keen fight as far as the elections are concerned. A lot of the parties want a big chunk in Bihar because it matters a lot when it comes to the final analysis and counting. And therefore, it does make a difference where every party is concerned. But the fight in Bihar has always been very tough for all the political parties, even the ruling party. So on the whole, I think Bihar is one of the key states which will decide which party really goes in front. Well, let's wait and see how it works out. लेकिन रामचंद्रन जी, जिस तरह से समझौता हो गया, समझौता सिर्फ सीटों का ही नहीं हुआ बल्कि उन्होंने उन सीटों के नामों का भी ऐलान कर दिया जिस पे कौन सी पार्टी लड़ेगी। तो जिस तेजी से काम उन्होंने किया, और अभी तक बिहार में अगर दूसरे गठबंधन की बात करें तो सीटों के तालमेल को लेकर कोई फाइनल कोई फार्मूला वो तय नहीं कर पाए हैं। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है जब जहाँ इतने सारे दल साथ में हो और सबको मनाकर एक सीट के समझौते पर पहुंच जाना। देखिए, मेरे ख्याल में ये बहुत महत्व रखता है, क्योंकि अगर बाकी राजनीतिक दलों में कन्फ्यूजन हो कि कौन सी पार्टी कितनी सीट ले जाएगी बिहार में, बिहार अपने आप में बहुत महत्व रखता है जब भी इलेक्शंस आती हैं, और इस बार मेरे ख्याल में उसके महत्व और भी बढ़ जाता है। मेरे ख्याल में जिस तरीके से बंटवारे की कोशिश की है, अब देखना पड़ेगा कि किसको कितना फ़ायदा होता है, और वो जब तक पूरी रिजल्ट्स नहीं आएंगी इलेक्शन के बाद, तब तक कहना बहुत मुश्किल है। So Ramachandran ji, if we look, take an overview of the entire general elections, it is a massive exercise. 96.8 crore is the number of total electors, which is actually 3 times of the registered voters in United States of America. That is the scale at which these general elections are happening. And 49.7 crore male, 47.1 crore female. So there's a good representation of growing representation of female voters. The youth have been roped in big numbers. How hopeful are you that people will be excited about coming out and voting? The kind of encouragement which is being given. I mean, if you see that in Arunachal Pradesh, even in a small hamlet, there is one voter, and the election machinery is going there to get that vote. So you feel that the urban voters will be enthused to come out and vote in big numbers? I think election is becoming a
a big celebration in this country. Every election, voter strength is improving, whether they are first-time voters or whether they are women or they are from other communities and the backward classes. But I think the election process in this country has gained tremendously since we became independent. And every year, the numbers are increasing across all sections of people, whether you're a first-time voter, whether you're women, whether you're elderly, whether you're men. I think the total numbers have increased phenomenally, and therefore it will make a difference on the outcome of this election. So we'll carry this conversation forward. Before that, we'll take a small break. Lok Nirnaya 2024 special program on general elections. Every evening at 7 and repeat broadcast at 9:30 p.m. on Akashvani Gold. Updates of election activities. Insights from regions and constituencies. Experts' opinion and analysis. In the world's largest festival of democracy, Stay tuned for Lok Prasarak ke Sath Lok Nirnaya 2024. 2024 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम टी.आर. रामचंद्रन जी के साथ अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। रामचंद्रन जी, पहले फेज का जो इलेक्शन है 19 अप्रैल को चुनाव होना है। 21 राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों यूटी की बात करें, कुल मिलाकर 102 सीटें। इसमें तमिलनाडु की सारी लोकसभा सीटें 39 है, उस पर चुनाव हो रहे हैं। राजस्थान में 12 है, उत्तर प्रदेश में 8 है, मध्य प्रदेश में 6 है, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, असम में 5-5 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, बिहार में 4 है, पश्चिम बंगाल में 3 है। यहाँ अगर हम खासतौर से तमिलनाडु की बात करें, जिस तरह की तमिलनाडु की राजनीति पिछले कुछ समय से रही और हमने जिस तरह के तमाम बयानबाजी और जिस तरह से तमाम प्रधानमंत्री समेत भाजपा के जो तमाम नेता हैं वो वहाँ पे दौरे कर रहे हैं और अपोजिशन का भी एक स्ट्रांग होल्ड वहाँ पे, जो सरकार जिस तरह से डीएमके की सरकार वहाँ पे काम कर रही है, उनके नेता ने जिस तरह से बयान दिया है, तो पहले फेज़ का ये इलेक्शन जो है वो क्या संदेश दे रहा है इन तमाम 102 सीटों पर? देखिए, इसका महत्व हम नकार नहीं सकते। पहली बात तो ये है कि बीजेपी चाहती है कि दक्षिण से उनको जितना सीट मिले उनके लिए उतना ही अच्छा होगा और वो उनको आगे बढ़ाएगा। अब देखना पड़ेगा कि तमिलनाडु में इस बार वोटिंग किस प्रकार होती है। ज़्यादातर देखा गया है कि द्रविडियन पार्टी को वोट दिया गया है और कांग्रेस अपनी तरफ से सीटें ले जाने की काबिलियत रखता है। क्या वो सीट उनको मिलेंगी और क्या द्रविडियन पार्टीज उतनी सीटें जो पहले ले जाती रहीं वो भी उनको मिलेगा, इस पे मेरे ख्याल में अभी डाउट है। बट आखिरकार तमिलनाडु दक्षिण में एक बड़ा राज्य है जिनमें उनके सीटें हैं, तो ओवरऑल अगर दक्षिण हम देखें तो सीट कोई कम नहीं है। तो दक्षिण अपनी स्थिति अपनी जगह पे काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, तो हम दक्षिण को नाकार नहीं सकते। बिल्कुल रामचंद्रन जी, और जो मैं जिक्र कर रहा था जिसका कि उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है पहले चरण में, तो हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनके पास हम चलेंगे। उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से संजीव सुंदरियाल जी। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल तो हम अपने श्रोताओं के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमें ये बताएं कि उत्तराखंड में नामांकन से लेकर मतदान तक का जो पूरा शेड्यूल क्या है और किस तारीख को क्या क्या होगा। जी संतोष जी, उत्तराखंड के पहले चरण में 19 अप्रैल को लोकसभा के चुनाव करवाए जाएंगे और इसके लिए अधिसूचना 20 मार्च को जारी होगी और इसी दिन नामांकन भी कराए जा सकेंगे। नामांकन का आखिरी दिन अब 27 मार्च रखा गया है और 28 मार्च को नामांकन की जांच की जाएगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 मार्च को तय की गई है। प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। चुनाव के लिए भाजपा ने सभी लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस ने अभी 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय किए हैं। अगर मैं बात करूं राज्य की टिहरी लोकसभा सीट से, भाजपा ने वर्तमान सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने इसी सीट से जो सिंह गुनसेला चुनावी मैदान पर उतरे हैं। अब बात करें अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से, तो अगर अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने वर्तमान सांसद अजय टमटा को एक बार फिर से विश्वास जताया, जबकि कांग्रेस के लिए इसी सीट से प्रदीप टमटा चुनाव लड़ रहे हैं। अब अगर गढ़वाल सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अनिल बुलिनी को अपना चुनावी चेहरा बनाया है, जबकि इसी सीट से कांग्रेस के लिए गणेश गोदियाल पार्टी का नेतृत्व करेंगे। वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर से भाजपा के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री व वर्तमान में इस सीट से सांसद
सांसद अजय भट्ट चुनावी मैदान में हैं और हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा के लिए चुनाव लड़ेंगे। जी संतोष जी। बिल्कुल संजीव जी। और अगर मैं उत्तराखंड में कुछ सीटों से जुड़े जो क्षेत्र आते हैं, जो पर्वतीय अंचलों की अगर मैं खास तौर से बात करूं, तो ऐसे स्थानों पर सुलभ चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने क्या क्या तैयारी की है? संतोष जी, उत्तराखंड का अधिकतर हिस्सा पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ चुनाव के दौरान कई तरह की परेशानियां होती हैं, फिर चाहे वो इन क्षेत्रों में मतदान करवाने की चुनौती हो या फिर मत स्थल तक मतदाताओं को लाने की। इस बार चुनाव के दौरान विभिन्न स्थानों पर जैसे दिव्यांगजनों को मत स्थल तक पहुंचाने के लिए व्हील चेयर का प्रबंध किया जा रहा है, जिसमें कई निजी संस्थान भी अपना सहयोग दे रहे हैं। वहीं मध्य स्थलों की निगरानी के लिए आयोग इस बार ड्रोन की सहायता भी लेगा। बात की जाए संचार व्यवस्था की, तो पहाड़ी अंचल में जैसा पता है कि नेटवर्क की समस्या सबसे बड़ी उभर कर आती है, तो इस बार राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को अभी से प्रदेश के जितने भी जो दुर्गम क्षेत्रों में है वहां मोबाइल नेटवर्क की पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि मतदान के समय किसी प्रकार की कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। वहीं लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड से पलायन प्रभावित पहाड़ी इलाकों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने उन लोगों से भी संपर्क कर रहा है जो अपने गृह क्षेत्र से मतदाता सूची में तो शामिल हैं, लेकिन रोजगार के लिए राज्य के भीतर अन्य स्थानों पर रह रहे हैं। अगर बात करें मत प्रतिशत बढ़ाने की, तो पिछले चुनाव में जिन क्षेत्रों में चुनाव प्रतिशत 50% से कम रहा था, तो उन क्षेत्रों में स्वीप के माध्यम से महिला चौपालों के द्वारा लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। Mr. Ramachandran, as our regional correspondent from Uttarakhand was saying, that special efforts are being made so that, people are able to exercise their franchise, even if they have some difficulty. We have seen that this is the first Lok Sabha elections in which voting from home facility has been provided for a person with disabilities and also for people who are above 85 years of age. How significant do you find this development? I think extremely significant, because a lot number of times in the past we have seen disabled and other people with disabilities have not really been able to come out and vote. But if the facility is now being made available to them in their homes rather than their having come to the polling station, which means they have to come with some people who can accompany them and take them there, I think that is a big saving grace, and more such people will be able to exercise their franchise. It could make a difference in the overall analysis once the counting is done and dusted. And you feel that creating more awareness so that people exercise their franchise as a duty, and also as you said, it's a festival of democracy. So if you come out and vote, you're actually participating in that festival. So you feel there'll be a lot of such campaigns also. We can hope for them to come ahead, where people can be encouraged to come out and vote and get out of that inertia which normally is there, which is why we don't get 100% polling. It's not really possible to expect 100% polling. It doesn't happen like that. But voting percentage in India has been far higher in every election. And every election it has gone up one step higher so that more people come and exercise their franchise. Every election, the Election Commission makes some more additions and subtractions to enable those who have had handicaps and other problems, so that they come out in large numbers and vote and exercise that franchise. I think in the overall analysis, the elections in this country have been free and fair, and above everything else, just about everybody of all sections, people have had the opportunity to exercise their franchise, which I think is a big achievement. बिल्कुल रामचंद्रन जी, हम एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पे चलेंगे। हमारे साथ राजस्थान से हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़ रहे हैं जितेंद्र द्विवेदी। उनसे ये जानेंगे कि राजस्थान में ग्राउंड रियलिटी यानी ग्राउंड जीरो पर क्या माहौल है। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजस्थान में लोकसभा के लिए घोषित जो पहले और दूसरे चरण की जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या है, किस तारीख को कितनी सीट पर चुनाव हो रहे हैं और कहाँ कहाँ चुनाव हो रहे हैं? देखिए, पहले चरण में जो 19 तारीख को वोट डाले जाने हैं 19 अप्रैल को, उसमें नॉर्दर्न राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान है, उसमें वोट डाले जाएंगे। जिसमें जो प्रमुख सीटें हैं उसमें बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, जो शेखावाटी इलाका है वो, जयपुर और जयपुर रूरल इसी में आएगा, प्लस जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है जिसमें भरतपुर, धौलपुर, दौसा और नागौर।
तो इस प्रकार से पहले चरण में इस प्रकार से मतदान होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को जो वोटिंग होनी है उसमें पूर्वी राजस्थान का कुछ हिस्सा और दक्षिणी और वेस्टर्न हिस्सा जो है, जिसमें कि टोंक सवाई माधोपुर और कोटा बूंदी 12 जिले हैं। इसके अलावा उदयपुर, बांसवाड़ा और वेस्टर्न पार्ट जो है वो इसमें दूसरे चरण में हिस्सा लेगा। जहां पर मतदान होना है दूसरे चरण में वो ये है सीटें हैं जहां पर मतदान होना है। यदि आप ग्राउंड रियलिटी की अभी क्या स्थिति चल रही है यहाँ पर उसकी बात करें तो कुछ जहां पर जो कैंडिडेट्स घोषित हो चुके हैं, 15 कैंडिडेट्स अब तक बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। 10 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो बिल्कुल जितेंद्र जी आपने तमाम जो बताया कि पहले चरण में दूसरे चरण में कौन कौन सी सीटों पर चुनाव होना है, निश्चित तौर पर जब तमाम उम्मीदवारों के नाम घोषित हो जाएंगे तो राजनीतिक चुनाव प्रचार जो है वो चरम पर पहुंचेगा। हम अपने श्रोताओं के लिए आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रथम चरण में जिन सीटों पर आपने जिक्र किया कि मतदान होना है, उसको लेकर निर्वाचन आयोग की क्या क्या तैयारियां हैं और किस तरह से मतदाताओं को वो प्रोत्साहित करने जा रहे हैं कि मतदाता अपने घर से बाहर निकले और ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। देखिए, 2 बातें हैं इसमें। पहली तो ये कि निर्वाचन जैसे ही आचार संहिता लागू हुई है तो निर्वाचन विभाग ने आचार संहिता की पालना का जो प्रोटोकॉल है 24 घंटे का, 48 घंटे का और 72 घंटे का, उसकी पालना को सुनिश्चित कराने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जो होर्डिंग्स हैं, जो सरकारी पोस्टर बैनर लगे थे, उनको सब जगह हटा दिया। दूसरा सवाल आपका ये है कि किस प्रकार से वोटर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि पूरे एंटायर स्टेट के अंदर स्वीप एक्टिविटी जारी की जा रही है और जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, जिसमें कि महिलाएं हो गई और दिव्यांगजन हो गए, वृद्धजन हो गए, जितने भी, उनको किस प्रकार से अवेयर किया जाए, उनको किस प्रकार से मतदान के प्रति जागरूक किया जाए, उसका महत्व बताया जाए। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन वाले इवेंट्स और प्रोग्राम बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में जिक्र करना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में युवा और फर्स्ट टाइम मतदाता है, उसके लिए कॉलेजों में जाके अवेयरनेस कैंप किए जा रहे हैं और उनको प्रेरित किया जा रहा है कि वो अवश्य रूप से मतदान करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी इस जानकारी के लिए। और निश्चित तौर पर चुनाव आयोग प्रोत्साहित कर रहा है, खासतौर से फर्स्ट टाइम वोटरों से भी ज़्यादा अपील कर रहा है मतदान करने के लिए। और अभी इस हमारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम लोक निर्णय 2024 में वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। लोक निर्णय 2024 आम चुनाव पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से आकाशवाणी पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। Welcome back to Lok Nirnay 2024. Mr. Ramachandran, our Jaipur correspondent was telling us about the importance of youth joining the voting rolls. And we have seen that special efforts have been made as he was outlining. And also another effort is that 17 years plus, teenagers, actually they are teenagers, who are not yet eligible, they can do advance registration. And already 13.4 lakh advance applications have been received, and as and when they will be eligible, they will be included in the electoral rolls. So how important is this concept of electoral rolls being updated, they being clean, and people who have probably deceased or who have moved out or who are appearing twice, removing them, having healthy electoral rolls, updated electoral rolls? How important is that? I think it's very significant. Let's not forget that elections in this country have been held since independence, and the kind of outcome that there has been has only improved and increased in every election that this country has held. The second aspect, that elections have added a new touch. The Election Commission has applied its mind and allowed more younger people eligible to vote to come to the voting booth and vote, exercise their franchise. The third is that overall the Election Commission has tried to ensure that the elections are free and fair, and this is a huge credit to the Election Commission of India.
I think in the overall analysis, elections in this country are more of a celebration than anything else, because at least the elections are held in a free and fair and just manner. And at the end of the day, the process is seen as clean and acceptable to all and sundry. Absolutely, very important. And now we have our correspondent from Mizoram who has joined us, Mr. Ging Gangte. A warm welcome to you. Welcome, Sonu. So, you'd like to know from you, in the first phase, voting will take place in Mizoram. Can you brief us about the entire process from nomination to voting? Okay. Yes, as you have said, Mizoram will go for Lok Sabha polls in the first phase, and it will also be the last phase, because there is only one Lok Sabha seat in Mizoram. As per schedule, gazette notification will be issued on March 20, while the last date of nominations is March 27. Security of nominations will take place on March 28, while the last date for withdrawal of candidates is March 30. As I have said, polling for the first phase will take place on April 19. Here in Mizoram, a total of more than 8 lakh voters will exercise their franchise in 1276 polling stations across the state. Now that political parties have announced their candidates, namely the ruling Mizoram People's Movement (ZPM) and the People's Conference Party, political wind has started to blow in Mizoram. Yes or no? So what preparations the Election Commission has made for the general elections in Mizoram? Are there any special measures? Yeah, of course. The Election Commission is taking up elaborate arrangements so that all eligible voters could participate in the elections. To this effect, the Election Commission is extending postal ballots as well as home voting facility. Besides, we could say that eco-friendly elections is another significant step taken up by the Commission. Right. I would like to add here on security front, although Mizoram is relatively a peaceful state and there is no report of election violence related cases in the past, however, nothing is left to chance, and the Commission will be deploying around 15 companies of Center Armed Police Forces in addition to 3,000 odd state police personnel. Thank you so much, Mr. Gangte, for joining us and giving us this information. Yeah. I would like to add one thing. Yeah. One of the big challenges in a hilly terrain like Mizoram is connectivity. Right. There are polling stations which are non-motorable, where polling personnel have to walk on foot or navigate on boat to cross the other side of the river. Absolutely. So the good thing about Mizoram is the vibrancy of democracy. We are running out of time, Mr. Gangte, but so thank you so much for joining us. बिल्कुल रामचंद्रन जी, संक्षेप में एक छोटा सा जानना चाहेंगे। हमने मिजोरम से अपने सहयोगी संवाददाता की बात सुनी। पूरे पूर्वोत्तर भारत में की अगर हम बात करें तो जो पहले चरण में जो चुनाव हो रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम में हो रहा है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, कितना महत्वपूर्ण है। खासतौर से जब हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में नॉर्थ ईस्ट का जो दिल्ली के साथ जो कनेक्शन है वो और ज्यादा बढ़ा है और ज्यादा कनेक्ट हुए हैं वो इमोशनली। देखिए, मेरे ख्याल में ये बहुत महत्व रखता है, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग नॉर्थ ईस्ट में हो रही है, खासकर उनका परसेंटेज अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा है। Absolutely. We are running out of time, sir. So I have to, I'd like to thank you so much that you discussed various issues and enlightened our listeners. Thanks a lot. Thank you very much. इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हमारे संवाददाताओं और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि आप अपने अपने लोकसभा सीट की तय तिथि पर मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। श्रोताओं, यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। You may email your opinion about this program at airnsttalks@gmail.com or at WhatsApp number 9289094044. With this, we conclude the program. We'll be back with you tomorrow at 7 o'clock. Namaskar. नमस्कार।